Good morning, you guys. I'm sure you won't find a more fresh face than mine in the morning at 5. Haha. Hey guys, good morning. It's almost 9. Hello Aryan. Hi. I'm with Aryan in the Hillsview restaurant right now. Hope you can see. Hello. Hello. Hi. It's very andhera. Hello. Hi. Before starting anything, I would first like to clarify one thing. I am so sorry for the lack of video last week. आप लोग जो मेरे वीडियोस के लिए बिकॉज आई डू गेट मैसेजेस कि स्वीकृति वेयर इज द वीडियो टुडे. तो लास्ट वीक क्या हुआ था, माई वीडियो वॉज प्रिपेयर. मैंने संडे को शूट किया था. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कूल्स के बाद घर पे आके रेस्ट ना करके मैंने एडिटिंग की, दिन रात किया. और ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें एडिटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी. मैंने 4 दिन की मेहनत की. उसके बाद जब मैंने पब्लिश करने की कोशिश की वीडियो को, यूट्यूब ने उसको ब्लॉक कर दिया. उसको उस पर कॉपीराइट लगा दिया. उसको किसी भी रीजन में देखना अलाउड नहीं किया. वो वीडियो बेसिकली थी रिएक्शन टू 5 मिनट क्राफ्ट हैक्स, और ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी. ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मेरे चैनल के स्टार्टिंग से लोग मुझसे कहते आए हैं कि स्वीकृति यू शुड डू अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. एंड आई वाज लाइक येस, आई लव वॉचिंग पीपल हु रिएक्ट एंड ट्राई दीज हैक्स, एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट माई ओन सेल्फ. मेरी वीडियो अभी तक बनी हुई है. इट इज स्टिल विथ मी, बट YouTube is not allowing to post. So I'll just try my best. मैंने पहले अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी आप सबसे अपोलोजाइज किया था इस बारे में. सो माई Instagram followers do know that प्रॉब्लम क्या हुई थी. अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो नहीं करते तो आप प्लीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे मैं बहुत सारे आपको अपडेट्स देती रहूँगी रिगार्डिंग माई चैनल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको चाहिए. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं. बट या अगेन ह्यूज apologize. What? Okay, let's do this again. Okay, a huge sorry from my side to all of you for the lack of video last week. So sorry. What a voice. That's good. ये लोग कितनी जोर से, बाप रे. That's too loud. नहीं गिरेगा. It's 1:12 right now and we're still on our way. I don't know when we will reach and I'm so tired. Are you tired? Sorry for the language. You're not? Yeah. Acha, you are. We all are. Before this, I want to ask you guys that I was thinking about changing the intro to my channel, the one which I have been doing for so long, because it just gets too long and मेरे टॉपिक तक पहुँचते काफ़ी टाइम हो जाता है. तो मैं चाहती हूँ कि इंट्रो थोड़ा चेंज कर दूँ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. ऑल्सो आज से मैं शाउट आउट्स एकदम चैनल के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दूंगी. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द शाउट आउट विनर्स इन एवरी वीडियो.
After a long 9 hours journey, we had started at 7:30. It's 4:30 now. When we are finally in the room, this hotel's name is Kumaon Mandal Vikas Nigam, and it's a pretty room. Kumaon Mandal Vikas Nigam. I like it. Sweet सा छोटा सा cottage. And it's said that you can see the Himalayas, snowy mountain tops from here in the morning, early in the morning. The best part is that I have Tarak Mehta ka Ulta Chashma here. Finally here, and I may look so pale because I'm very tired. But I'll meet you later, okay? Bye. This is the cutest part of this cottage where you can get sun-kissed pictures easily. Yep. I love this part. This is straight from the entrance in, where you can sit and you can lie and you can click awesome pictures. Yeah. To follow me on Instagram, probably I can post some sun-kissed pictures. Haha. Yes. Link in the description. You can go follow me there. Yay! I just realized I did not tell you guys where I am, but I showed you everything else. So I am in Chakori, which is 2010 meter above, and it is 173 kilometers away from Nainital. Yep. It's very cold. It looks like it's going to rain. If you want to know more, you can just pause this video and read it out for yourself. Just pause it if you want to read it out, okay? Thousand years later. Hey guys, 8:20 p.m. right now. Very cold. I don't know what's the temperature right now, but it's quite cold. बारिश हुई थी यहाँ पे बहुत जोर वाली, तो और ज़्यादा ठंड पड़ गई उसके बाद. But we are off to have our dinner. Yes. Let's see what we will have. Why am I breathing heavily? I don't know. Why is it so cold? सुबह बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा. तबीयत खराब हो रही थी, इतनी गर्मी थी. Lou when we were in the car. Yup. That made us feel so ill. And now this cold is making us feel ill. Luckily the homeopathic Yup. vomit doses. Yes. We slept. Yes. And after 45 minutes, means after 2 We hours were of okay. sleeping, after 45 minutes of wait, we reached. I'm so sorry because you can't see my face. Yup. But I don't know, there is no view right now. जैसे कि नैनीताल में रात को भी व्यू होती है, यहाँ पे हम बहुत ऊंचाई में है ना. It's cute though. Turn on the flashlight anyways. The flashlight makes it look so bad. It's cute though. There comes Mom and Dave. Hello. Daddy. Hi. Ma, hi. Feeling chilled. Yes. So cold. We are done with the dinner and कल का plan of action है कि हम लोग सुबह सुबह जल्दी चले जाएंगे and we will be off to मुंशियारी. अभी हम चकोरी में हैं, तो हम जाएंगे मुंशियारी. And I will meet you tomorrow. Bye. Good night.
Hey all, good morning. So this is day 2 and I am not sure whether you can see me or not because I cannot see myself on the camera. But this is day 2 and I woke up at 7:30. Yes, and it is 9:30 now. Yes. We just had our breakfast. We had gobi ke parathe and aloo puri sabji, whatever. We had that and now we are off to our cottage room. We'll have our final packing and then we'll leave for Munchiari. Another thing, I am in a I'm living in Uttarakhand, which is, filled with so many different ranges. So whenever I vlog, it's gonna be the times when I am going to show you my trips to different places in the hills. No, it's not the same. You guys may be thinking that it's the same place over and over again, which I'm showing, but it is not. Clearly it is not. So till now I am living in Uttarakhand. You are going to see all the hills I'm going to visit ever. So we are going to leave for Munchiari in another, I guess, half an hour, 1 hour. I'll meet you then. Here you go, the outfit for the day. And I'll also show you the outside from our room. Yeah, it is believed that you can see the snow-capped mountains over there early in the morning. और कभी-कभी ऐसा होता है कि अब बादल छा जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा. कल बहुत जोर की बारिश हुई थी, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था. वो कभी-कभी जब दिखाई नहीं देते पहाड़, वो आज था, तो हमको पहाड़ ही नहीं दिखे, मतलब स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखे ही नहीं हमको. इट्स सैड कि हमको पहाड़ नहीं दिखे, लेकिन लेट्स गो टू मुंशियारी. लेट्स होप कि वहां दिखेंगे.